I should stop making these complex videos. Takes a lot of time and efforts. Exhausting to research as well. You know what else takes a lot of time and efforts? थोड़ा आंखों का यूज करो. Majority लोग आज के टाइम में कौन सी ऑक्यूपेशन पे सर्वाइव करते हैं? It's either gonna be corporate desk jobs और फिजिकल लेबर जॉब्स. एंड फिजिकल लेबर जॉब्स मतलब सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी नहीं, ऑल्दो इट इंक्लूड्स दैट, बट इट आल्सो इंक्लूड्स baristas एंड पर्सनल शेफ्स एज वेल. दैट्स फिजिकल लेबर जॉब. एंड ये जॉब्स सर्वाइवल के लिए वायबल इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो एजुकेशन है दैट इज फेयरली इजी टू कंप्लीट एंड इवन एक्सेल एट. एंड इन जॉब्स के थ्रू जो इंडस्ट्रीज मिलती हैं तुम्हें काम के लिए, दोज इंडस्ट्रीज आर केटरिंग टू आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ एवरीडे नीड्स, बेसिक नीड्स. एंड दैट इज व्हाई एवरी अदर गाय इज डूइंग द एग्जैक्ट सेम जॉब. But पता है what every other guy is not doing? Creating art. Movies का example ले लेते हैं. And that example encompasses everything. But to start, costumes and dresses की बात करते हैं. जैसे majority stars red carpet पे सिर्फ गिने चुने brands को represent करते हैं and पहनते हैं, like Donatello, that is a person, same as Versace, Armani and other अमीरों की बकचोदी. Bullshit. नाम भी प्रोनाउंस नहीं होते मेरे से, बट these are some common brands that every star wears on red carpets. ऐसे ही मेजर मूवीज में भी लिमिटेड नंबर ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स जो कि वेल नोन है are called to minimize the risk of costume not hitting the mark. That means अगर 20,000 मूवीज भी बन रही हैं साल में, तो you can assume कि a handful of artists are gonna be called to leave their mark. This is how competitive this market is. And ऐसे में एक small artist का recognize होना is a very honorable thing to happen. मतलब one among millions, कई हजार लोग वहां पे हो सकते थे, but still she was recognized. But sadly, अब टॉपिक पे आते हैं. Recognition that she got was from shameless giants. Art stolen by Disney. Zara steal Tuesday Besant's artwork. 1-1 by the way. 1-1 stealing. That's shameful. And पता है what Zara told this lady in reply to her lawsuit, or at least complaint? Fuck off, lady. L plus ratio. Literally. उन्होंने बोला कि like you're too small to be recognized by people in comparison to us. Do whatever the fuck you want. We don't care. And good luck with the legal fees. And यही सिर्फ दो limited examples नहीं है. Well-known organizations regularly steal from either small, practically अकेले artists and even small IPs as well. यहाँ पे मैं game को रेफर कर रहा हूँ. And ऐसा regularly इसलिए होता रहता है क्योंकि well lawsuits पे पैसा फेंकने की औकात सिर्फ corporate giants की होती है. Normal artists की नहीं. Artists are busy making complex arts that take them hours of their life just to afford a cup of noodles. तुम्हें कुछ idea है pay disparity का artist की life में? या सबको ऐसा लगता है कि being associated with something big is equals to Lamborghinis and hella bitch. Drake की बात करते हैं for a moment. सबको पता था काफी टाइम से कि Drake के पास ghost writers हैं. Everyone knew it. It became more known and a hot topic of discussion after Kendrick literally butt them in their last beef. Now, depending on views and listens that Drake get on his multi-platform appearance, मतलब majority raps में तो वो money और life को ही flex कर रहा होता है ना. Kendrick addressed that as well in one of his verses. तो उस हिसाब से Drake के ghost writers must be well fed. No, this is Quentin Miller, one of the former Drake ghostwriters. He was fired after it was revealed that he was a ghostwriter. उसके बारे में बाद में बात करते हैं. This is how Drake ripped him off by giving him a 30K deal, 30 grand. Sounds like a lot, but in comparison to the work that he did, it was breadcrumbs. I mean, you would think that, okay, if they gave you, let's just say 100 grand. It was 30. Okay, so they gave you 30 grand and they got 6 Drake songs out of it? And everything else that I did after the Drake shit, like a few other songs that I did, like some Wiz Khalifa shit, some G-Eazy songs, shit like that. Wow. And although ghostwriters are responsible for majority of the mainstream bangers that you listen to, क्योंकि well production के लिए लोग हैं separate, editing के लिए लोग हैं separate, and voice matter करती नहीं, auto tune does most of the job. Majority artist का नाम पैसे लेके जाता है and ghostwriter की lines popular होती हैं. ये situation होके भी अगर ghostwriter is revealed, उनकी जाती है नौकरी. And so by the time it all blew up and Drake wasn't fucking with me no more and Drama wasn't fucking with me no more, I still was in that publishing deal. They're basically told to get the fuck out of the studio, जिससे कि well main artist की reputation बच सके. And people do nothing about it. Matter of fact, majority of people hate them. And चलो ठीक है, मान लेते हैं कि एक दो artist talented भी हैं. Do you really think they are making good money day one? No. Lyrics उनके, voice उनकी, production में भी उन्होंने खुद personally ना भी करी हो. It doesn't matter. अब majority लोग producers use करते हैं separately. But even they are getting ripped off by the platforms that they're releasing the music on, and even their own managers. Because here's the deal, right? So let's use that example. So if I get 10 grand, you know it's worth 20 grand, and then you go get 20 grand, and then you take 10 and you give me 10, in my manager's contract,
contract with you, what percentage do I give you? 15%, right? Those, do I still pay you? Do I pay you that 15% out of the 10 grand that I just got? Oh, that's shiesty. Knowing that now you got, If you are a manager and you charge more than what you told the artist and you double back and go get your fee, you are a scum. And even after your manager have butt fucked you practically, do you really think you're gonna get a great deal from the platform day one? Just scam kids in crypto pump and dump scheme like true rappers these days, by the way. And ये Spotify deal, by the way, better half industry का. YouTube perhaps used to pay music artists as well, अब का नहीं पता, but them as well on the basis of per 1000 views, जबकि एक listen के पैसे मिलने चाहिए क्योंकि वो music है. And पता YouTube ने क्या reply दिया to managers and major production houses that struck against this practice? वो बोलते हैं भाई मत करो अपलोड, हमें ना मेल भेजते रहना जब भी तुम्हें अपना गाना किसी YouTube वीडियो में यूज होता हुआ दिखाई दे, we'll take down that video and give you the revenue. बट मेल भेजते रहना, 1000 मेल भेजोगे, 1 मिलियन मेल भेजोगे, तुम्हारी कंटेंट की आईडी क्रिएट हुई नहीं YouTube पे क्योंकि तुमने प्रैक्टिस के चलते अपना कंटेंट YouTube पे अपलोड करा ही नहीं, भेजते रहो मेल. YouTube ने बेसिकली बोला माच हमारे हिसाब से चलोगे तो हम तुम्हारे कंटेंट के पैसे देंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर 1000 व्यूज, और ना मत अपलोड करो, टेक डाउन द कंटेंट जो कि फ्री में अपलोड तो YouTube पे होना है. एंड ये सिर्फ एक चीज नहीं है दैट YouTube डज इन अ नास्टी मैनर. वो एनिमेशंस देखी है तुमने? एनिमेशंस का खुद का अपना एक कल्ट फैन बेस है बिकॉज दे टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. एंड इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू चैनल ऑन YouTube अराउंड एनिमेशंस एंड अपलोडिंग एनिमेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस, you must be aware of a lot of artists that already excel at it and are very successful in terms of number. But बताओ सबसे बड़ा ब्लॉक क्या है for animators on YouTube? The higher the quality of content, the better the viewer count. But at the same time, the lower the frequency of uploads. And also, smaller the length of the animation. And ऐसे में YouTube क्या करता है? Here is a basic explanation from Gamer Grumps. Most people think that the value of a video can be measured by how many times that video has been seen. However, we now reward videos that have more time watched. This is a better reflection of the value of the content rather than how many times it was seen. All major search and discovery algorithms are optimized for watch time throughout the site. Not all views are the same. Increasing videos' length just to get more watch time does not work because it affects audience retention and does not increase time watched. Also, don't decrease watch time to increase audience retention. Suggested videos are ranked by watch time. Value is not dependent on the individual video. It also depends on the viewing session from that video. Because of this, the most financially successful channels on YouTube are now the ones that thrive in this environment. Any channel that is able to produce 10 minutes or more of content on a regular basis is able to be entirely self-sustaining. I speak firsthand on this as a member of the YouTube channel Game Grumps. We produce 30 minutes of footage every day, something that is inconceivable for any animation channel to achieve. YouTube's stubborn laws and guidelines being same for everyone except the breastfeeding videos and the transparent wardrobe overhaul and tryouts. You get it? I know you get it. YouTube's laws suggest कि भाई तुम्हारी वीडियो की औकात डिसाइड होगी तुम्हारे वॉच टाइम पे, व्यू काउंट पे नहीं. अब अगर ऐसे में तुम लोग compete करोगे विद ऑर्गेनाइजेशनल चैनल्स जो कि जो दिन का घंटे भर का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, तुम्हारे हो जाने मोशन स्मूथ. It's a diarrhea joke, basically shit at higher frame rate. And then you can always choose to move to an industry with your animation skills. But then again, at the same time, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि that organization, that big organization was found stealing someone else's work to create their own, what they call masterpieces. Who can you even trust them? Disney allegedly stole Moana's entire story from Bucky, and the original writer of Bucky also sued Disney for $10 billion, which is a very small amount, by the way, in comparison to what they made with Moana. होना कुछ नहीं है, I know, कुछ नहीं होता. These are big organizations. But तुम ये देखो कि for money, even your close colleagues will rip you off. Bucky allegedly जो बेस रेफरेंस था फॉर मोआना, वो एक बंदे ने ओरिजिनल राइटर से ली विद स्टोरी बोर्ड्स, कॉन्सेप्ट आर्ट एंड अ ट्रेलर एज वेल अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल राइटर, एंड he sold it to Disney and Disney ने खरीद भी ली, marking how unethical they are. And ऐसा पहली बार नहीं हुआ, by the way. बैटमैन का ओरिजिनल क्रिएटर बिल फिंगर died broke and unappreciated due to again stolen IP. मार्वल लेजिट जो येलेना की को क्रिएटर है ना, उसको लीगल तरीके से चुप गया इन पेपर्स, प्रॉमिस की कुछ पेमेंट एंड कर दी कुछ और पेमेंट एलिजिडली. एंड अब जो ओरिजिनल को क्रिएटर है वो अटकी हुई है टू गेट हर ओरिजिनल promised payments that were mentioned in a highly ambiguous and I would say unethical contract. Allegedly मैं किसी को sue नहीं कर रहा. Nowhere and practically no form of art is safe.
वो Shein है ना, that clothing sweatshop in China that offers you clothing at a very cheap price. Allegedly, it literally steals from real world dress designers shamelessly. And तुम्हें एक और चीज बताऊं, ये जो big hubs होते हैं ना, that deal with a specific form of art, डायरेक्ट यहाँ डील करके एंड यहाँ वर्क करके मिलियनर्स बनने का सोच रहे हो ना, तो भाई ख्वाब हटाओ एंड सो जाओ, प्रॉब्ली गेट अ न्यू ड्रीम। जापान से बड़ा कोई एनिमे क्रिएटर नहीं है। उस इकोनॉमी का मेजॉरिटी प्रॉफिटेबल हाफ इज फ्रॉम एनिमे इंडस्ट्री इटसेल्फ। वहां पे तो एनिमेटर्स के लिए स्कोप है ना। वेल वही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। जापान में एलिजिडली इवन सीनियर एनिमेटर्स आर गेटिंग मिनिमम वेज। जुजुत्सु काइसन के एनिमेटर लिटरली अपॉलोजाइज कर रहे हैं फॉर नॉट डिलीवरिंग द प्रोडक्ट इन टाइम एंड तुम मजे ले रहे हो। अब भाई एनिमे लुक्स रियली नाइस, पीछे लोग मर रहे हैं। AOT के एनिमेटर्स पूरी रात स्टूडियो में सो रहे थे टू कंप्लीट व्हाट आई कॉल्ड अ मास्टरपीस वंस। एंड हियर इज अ स्टेटमेंट जिसको पढ़ के माय ब्रेन मेल्टेड। फॉर्डर मतलब what the fuck do you even mean? These are humans you're talking about. मतलब basically कहने का मतलब ये है कि जापान में to get a raise just because you're talented at animation is a stupid talk. क्योंकि 20,000 talented animators और खड़े हैं स्टूडियो के बाहर। तेरे को इन पैसों में काम करना कर, वरना that's the kind of mindset that they treat people with. Allegedly. Poor working conditions, constant harassment, low wage and much more. Same with voice acting. तुम ये सोचोगे कि भाई बोलना ही तो है और an hour hourly पे बहुत अच्छा है, बट तुम फिर ये भी समझो कि एनिमे फ्यूचर में कितना कमाएगी एंड तुम्हारा रेसिडुअल इनकम से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वेल सेम गोज फॉर कॉस्ट्यूम डिजाइन और इवन कैरेक्टर डिजाइन एज वेल। प्लस तुम्हें साल के कितने गिग्स करने पड़ेंगे टू मेक इनफ मनी फ्रॉम दैट सिंगल जॉब ऑफ योर्स, द वॉइस एक्टर जॉब, टू मेक इनफ मनी टू लिव द प्राइम लाइफ इन द स्पॉट दैट यू वर्क इन। जापान तो लाइक ट्रैवल टूरिज्म के लिए पॉपुलर है ना, तो वहां पे रहने का सपना तो सबका होता है। कितना काम करना पड़ेगा। एंड आर्टिस्ट इस जॉब को सिर्फ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ कूल इंडस्ट्री एंड दे लव देयर जॉब। अदरवाइज ऐसा फर्क नहीं पड़ता उन्हें, क्योंकि पे इज नॉट गुड। एंड इवन बोरिंग सिस्टमैटिक कोडिंग जॉब्स सक एट देयर ओनली task. Games. Do anyone if you remember how many times Cyberpunk 2077 got delayed? उस गेम की anticipation उस गेम के रिलीज से ज्यादा पॉपुलर। And all this after major crunches were introduced. Crunches का मतलब ये होता है कि भाई industries making you overwork for prolonged period of time without caring about your health close to the release so that the product can be delivered on time. And वो इस overwork underpaid overwork को modern day slavery को बोलते हैं normal. They have somehow normalized crunches. But anyway, Cyberpunk in time after its aspect of sucking ass got fixed. अब तो काफी playable हो गया है, but हाल ही में अभी उन्होंने अपना part tracing and ray tracing update जब रिलीज किया, that made the original features even worse than their previous release somehow. And some modder decided to fix it and the studio was okay with it. But not everyone in the gaming industry appreciates a free favor. GTA's parent company, Take-Two, legit bunch of retards, sued a bunch of modders that were remastering GTA 3 and Vice City so that it can become more compatible and properly playable on older version of Windows. Yeah, they sued them. They literally sued them. उसी टाइम पे बैकग्राउंड में Rockstar काम कर रहा था on their trilogy, the trilogy, the remaster release of great games, raising dead from the grave to make money, these shameless studios. इस slop को बेचने के चक्कर में that company legit attacked the GitHub repository of those modders. These fuckers, these smart fuckers were doing you a favor. Rockstar, Take-Two, like are you stupid, you clowns? And बाद में केस क्लियर भी हो गया, I think repo भी क्लियर हो गई, but there were allegedly some silent off the court payments that were made by these modders, damage control by Take-Two so that they don't do this again. एक मैसेज पहुंचाना है just like Nintendo did to Palworld. I guess allegedly Bethesda नहीं करता ऐसा, मतलब mostly they allow paid mods. Well, क्योंकि majority of Bethesda products are surviving on the courtesy of modders and the beautiful mods that they create. Everyone knows that Starfield sucks ass, but people still play it because there are mods that makes it functional and I would say much more interesting to play. And this way, at least Bethesda is capable of imposing their own quality control on the mods so that nothing inappropriate or malicious makes it into the system. So yeah, big W from Bethesda. At least the modders are getting paid right now. But that doesn't go for Nintendo. Holy Slippy. Now, if you don't know what Slippy is, if you haven't played it or seen anything on it, it's basically a new way to play Super Smash Bros. Melee. It's a way to play that game online. But it was actually made by one dude named Fizzy, who took off 6 months, quit his job, and spent hundreds of thousands of hours just working on this thing. But the planned tournament, the Big House, which if you don't know, it's like one of the most respected 9-year-old tournament series, got a cease and desist
from Nintendo. They literally have to stop all operations because Nintendo said so. And final thing about digitally distributed art, companies के पास काफी ways हैं to silence you if they don't like you. One of them is shadow banning. अभी recent TikTok lawsuit में the guy that conducted research on shadow banning showed कि अगर एक company को एक certain notion, a certain topic, a certain idea ज़्यादा push करना है in comparison to something other, they can suppress the content expressing that other idea without even raising suspicion. क्योंकि वो delete नहीं कर रहे, वो content I would say remove or strike नहीं कर रहे. They're just suppressing the impressions that the other idea gets. And that way, the counter idea gets pushed more. And people are fucking retarded. उनको जो दिखता है वो believe करते हैं. And that's how they tip the scale in the market and people's opinions. And that is very bad. Has to be considered illegal. That is why this guy that conducted research pushed the idea कि भाई laws, rules and regulation होने चाहिए on what the company can shadow ban. Or like if they can shadow ban even. Like completely remove the practice of shadow banning. मेरे साथ हुई है काफी बार shadow banning on YouTube, which is very shameful and funny actually. Prime example is this Mr. Least video. अगर तुम एक छोटे चैनल हो ना man, तो दम है तो एक journalism video बनाओ about Mr. Least while using the keyword Mr. Least and impressions लाके दिखाओ. भाई मार जानिए पूरी की पूरी वीडियो की, क्योंकि YouTube suppresses content with and against Mr. Beast due to the controversies that came out in recent years. इस वीडियो का स्टार्ट पता क्यों स्लो था? क्योंकि again I use Mr. Least as a keyword in it. Why would YouTube wanna lose their prime earner? He's an organization level channel. So YouTube started shadow banning any small channel from creating any content about Mr. Least. इससे की suspicion raise ना हो, सारा content ही suppress हो रहा है, good and bad. इन channels पे मत जाना भाई, these are big and verified channels. इनकी audience sustainable है, they like the video and that way the video gets pushed. चाहे video suggest हो ना हो भाई, इनकी खुद की audience इनको पहले घंटे में 100k views लाके दे देगी. And that way the algorithm will have to rely on the likes aspect of the video. Impressions अभी भी नहीं दे रही YouTube खुद. And this was all digital hell for artists. कभी स्टंटमैन का सोचा है? या स्टंटमैन की जॉब आर्ट में आती है, यू रिटार्ड पर्सन. या दे डोंट गेट शिट. देखो ज्यादा डेथ्स होती नहीं इन स्टंट बिजनेस क्योंकि वेल रेगुलेशंस एंड सेफ्टी आर टॉप नॉच दीस डेज. होती है, थोड़ी बहुत होती है, आई वोंट डिनाई दैट. बट दीज गाइज दैट डाई ऑन द जॉब, दे die every day in their career when they get their payment because well it's so low and unfair. Residue इन्हें मिलता नहीं. Deepfakes are now replacing the stunt artists completely. CGI as well. And ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल स्टंटमैन बनने के बाद ही तुम्हारी लाइफ में रियल रिस्क स्टार्ट होगा. पूरी लाइफ भी हड्डियां तोड़वानी है तुम्हें. अनप्रोफेशनल लाइफ बाय द वे, नॉन पेड लाइफ. तब जाके तुम एक प्रोफेशनल स्टंटमैन बनोगे और वहां पे भी हड्डियां तोड़वानी है. इट इज सच एन अनफेयर जॉब. इट्स ऑलमोस्ट stupid to be one, but they're doing it for passion. These are great people. And the worst of all of these jobs is freelancers. तुम करो एक्सपोजर के लिए काम फ्री में, तुम इसी के लायक हो सके तुम पे गाली नहीं दी जा रही टू शेमलेस ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर मेकिंग यू वर्क फॉर फ्री एंड फॉर एक्सपोजर. $5 में लोगो बना दो, फ्री में ब्लॉग लिख दो, फ्री में ट्विटर हैंडल कर लो जस्ट फॉर एक्सपोजर. भाई मुंह पे मार के बात करो इनसे. यू आर यूनिक, यू आर टैलेंटेड. अपनी औकात ढंग से एक्सप्लेन तो करो. या मार्केट में घुसने की इतनी ज्यादा जल्दी थी, अर्न करने की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि तुमने पूरा सोशल इंजीनियरिंग वाला एस्पेक्ट मतलब स्किप ही कर दिया एंड अब फ्री में काम कर रहे हो. काउंटर प्रोडक्टिव, यू आर स्टूपिड. स्टूडियोज आर allegedly legit hiring freelancers now to improve the already AI generated art and then telling them to get the hell out after paying them with a bag of peanuts. क्योंकि आर्ट तो पहले से जनरेटेड था. अब समझ में आया कि वाई आई एम नॉट हायरिंग एनी एडिटर्स एज ऑफ नाउ, क्योंकि मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है. मैं फ्री में काम नहीं करूंगा भाई, दिस इज अगेंस्ट माई एथिक्स. एंड हाँ, जब मैं 10K पे स्ट्रीम करना स्टार्ट करूंगा, द गेमिंग, द ऑर्गेनाइज्ड एंड द चिलिंग स्ट्रीम्स एज वेल, अब आई विल स्टार्ट पेइंग माई हाईलाइट एडिटर्स एंड द थंबनेल डिजाइनर्स फॉर व्हाटएवर दे आर मेकिंग फॉर मी फ्रॉम द स्ट्रीम. सो आई विल बेसिकली टेक द डोनेशंस and pay the editors whenever they are like working for me. At least this is what I've decided on how to pay them. Ad revenue is not that much as of now, but if there is a better way to pay them, do let me know in the comments. Until then, yeah, bye. Free में काम मत करो please.